Hello, friends. Once again, welcome to our new session of physics. And in our last lecture of motion, we have completed the concept of distance and displacement. Distance and displacement. This concept was absolutely made clear to all of you by using examples of various numericals, and there we have seen that what is the difference between the distance and the displacement. Now we all know that when we talk about motion, जब हम मोशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने ये बात की है कि उसमें जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो इट ऑलवेज चेंजेस ए पोजीशन. सपोज देयर इज ए बॉडी एट ए. So when there will be motion, it will change its position from A and will reach its position at somewhere on B. Now when this body is moving from A to B, obviously in order to go from A to B, it has to travel some, you can say, distance. It will travel some distance. And obviously it will be taking some time also to reach from A to B. ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जब भी एक बॉडी मूव करेगी, पोजीशन को चेंज करेगी A से B की तरफ, तो इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, है ना, एंड इट विल ट्रेवल दैट डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम. अब बॉडी की जो मोशन है वो कई तरह की हो सकती है, जिसमें हम बात करते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी नो दैट आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये बात सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी घूमती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. And that example is one. Second example is that when you talk about your any watch, whether it is your wristwatch or even your wall clock, the hands of the watch, they also show a type of motion. So two motions we have discussed. Third motion you can see is the motion of a bus on a road. The motion of a bus on a road. Now in these three examples, you will appreciate that what happens is when we talk about the revolution of the earth around the sun, तो क्या होता है कि earth travels equal distance, earth travels equal distance in equal interval of time. In equal interval of time, and that is the reason why you know after every 24 hours you get the days changed. You get the days changed. After every 1 year it completes one complete revolution around the sun. So there what is happening? The body is traveling, the body is showing a kind of motion where it covers equal distance in equal interval of time. यही बात आपकी घड़ियों में होती है. When you talk about a wall clock which is having our hand, you know after every 12 hours it will complete one rotation, or you can say one revolution. If you talk about a minute hand, after every 60 seconds it will complete one revolution. In the same manner, if you talk about the fan, the revolution of the fan, in these three examples, a body is showing a kind of motion
where it covers equal distance in equal interval of time, and such kind of motion is called as uniform motion. It is called as uniform motion. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा. आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, ऑल द स्टूडेंट्स दे वियर द सेम टाइप ऑफ यूनिफॉर्म. आर्मी की यूनिफॉर्म है, ऑल द सोल्जर्स वियर सेम टाइप ऑफ यूनिफॉर्म. पुलिस वालों की यूनिफॉर्म है, all the police people, means you can identify them with their uniformity. So uniform motion is the type of motion when the body covers equal distance in equal interval of time. एग्जाम्पल वैसे ही लेना है तो आप ले लीजिए. सपोज दीज आर द 3 hours, 1 hour, 1 hour and 1 hour. If a body covers 30 kilometers, 30 kilometers and 30 kilometers, then we say that the vehicle is having uniform motion. Is it clear? And if the things are not in that manner, the example that I have taken is when a bus moves in the city. So first of all, when the bus just starts from the bus stand, its speed is very, very small. It travels small distance in large interval of time, and as it moves out of the bus stand, then it covers more distance in the same time. Then when it goes out of the city, it travels further more distance with the same time. It means in different distances are being traveled in equal interval of time. So that is called what we say non-uniform motion. तो क्या होगा? In non-uniform motion, the body will travel unequal distances in equal interval of time. Only this difference. So when a body covers unequal distances in equal interval of time, the body is said to be having non-uniform motion. For example, 30, then maybe 10, and then maybe 20. That means for every 1 hour, the distance traveled was different. So when this is the situation, then we say the body is having non-uniform motion. And everybody knows what is the relation between distance and time. शाबाश. डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है बेटा? स्पीड. डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है? स्पीड. So now we are going to talk about the concept which is called speed. Speed means the distance traveled by a body. Speed is the distance traveled by a body per unit time. Per unit time. This is called a speed. और speed में direction नहीं होती है. It has only magnitude. So speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. It has only the value, only the magnitude. There is no direction involved. So what is speed? Speed is the distance traveled per unit time. So suppose a body travels 60 kilometers, let us say in 1 hour. So what is the speed? The speed of the vehicle is said to be 60 kilometers per hour. So this is the speed. Distance, speed is equal to distance over time. Distance over
time. So what will be the unit in physics? One thing you should always remember, जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे हमें उसकी यूनिट का पता होना चाहिए, और न सिर्फ पता होना चाहिए, वी शुड मेंशन दैट यूनिट आल्सो. 60 किलोमीटर्स पर आवर, 60 मीटर्स पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ठीक है ना. तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इन जनरल द यूनिट फॉर स्पीड इज किलोमीटर्स per hour. This is the SI unit of speed, system of international units. ठीक है. In all over the world, the speed is usually expressed as kilometers per hour. अब वही वाली बात कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी का क्या हो जाएगा? Non-uniform speed. Again, I will not write the definition again. तो यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी हो जाएगी? A uniform speed will be the speed when the body covers equal distance in equal interval of time. तो one is uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? बॉडी विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेम मोशन वाली बात आ गई. एंड सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज द यूनिट और इज द स्पीड व्हेन बॉडी कवर्स, शाबाश, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और एक चीज को ध्यान रखेंगे, आज के लिए लास्ट करेंगे, कि whenever there is a non-uniform speed, जैसे मैं ये कहता हूं कि एक बॉडी है, पहले एक घंटे में उसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, दूसरे एक घंटे में उसकी स्पीड डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, और अगले एक घंटे में उसकी जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है. तो whenever, तो फाइंड व्हाट इज द स्पीड, तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है वो तो पता नहीं. तो whenever we have a non-uniform speed, my dear friends, try to understand, जब भी एक non-uniform speed होगी, we will find always what is called average speed. What we will do? We will find average speed. जैसे जब आप बस में बैठते हैं, तो सपोज आपने दिल्ली जाना है, तो कोई आपसे पूछता कि हम दिल्ली कितनी देर में पहुंचेंगे, तो हम आइडिया से बोलते हैं 4 घंटे में. हाउ डू यू नो एग्जैक्टली 4 घंटे कैसे है भाई? क्या गाड़ी को ब्रेक नहीं लगेगी? क्या गाड़ी के लिए कि रुकेंगे नहीं? कहीं किसी रेस्टोरेंट पे लंच नहीं करेंगे? क्या कोई ट्रैफिक नहीं आएगा? कहीं कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी? दैट मीन्स आवर स्पीड विल नॉट बी यूनिफॉर्म. when we start from suppose one city and go to another city, will the speed always be uniform? No, it will keep on changing. कभी धीरे, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम. So that means we are traveling with a non-uniform speed. And when we are traveling with a non-uniform speed, तो हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं. और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है ये आप याद रखेंगे. दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. This is the formula for average speed. Total distance divided by total time. Any doubt? So my dear friends, today we conclude here, and tomorrow when we meet, we will solve a couple of numericals based on average speed, and some numericals based on distance and displacement also.
तो कल का जो सेशन होगा दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. ओके, so keep revising, go through your books and take care of yourself. Thank you very much.